Hello students, how are you? I hope you all are fine. In this video of revision, we will discuss about a new topic of grammar and the topic is adjectives. As we have already discussed about articles and pronouns in our previous classes. तो चलिए अब हम adjectives के बारे में जानते हैं. What is adjective? Adjectives are the words that give more information about the noun or pronoun in a sentence. They are also called describing words. Adjective वो होते हैं जो कि noun या फिर pronoun के बारे में हमें और information देते हैं कि वो कैसा है. Here are some examples like blue dress. Look at the picture. ये dress कैसी है? Blue कलर की. तो हमने यहाँ पे क्या दिया? Blue dress. Next is small house. Text. Noun तो आपको याद ही होगा. Noun is the name of person, place, animal or thing. Here are some examples. Boy, cat, sadness, chair, house. These all are the example of noun. ये सारे naming words हैं. Nouns में क्या कौन सी चीजें होती हैं? Person, place, animal, thing. यहाँ पे देखिए पर्सन में है गर्ल. गर्ल कैसी हो सकती है? गर्ल स्मॉल होती है, इंटेलिजेंट गर्ल हो सकती है या फिर ब्यूटीफुल भी हो सकती है. नेक्स्ट पर है प्लेस. प्लेस में पार्क. पार्क इज द नेम ऑफ प्लेस. पार्क कैसा हो सकता है? बिग हो सकता है या फिर ग्रीन पार्क. नेक्स्ट इज एनिमल. एनिमल में डॉग इज एन एनिमल. डॉग कैसा हो सकता है? ब्लैक डॉग या फिर क्यूट डॉग. नेक्स्ट इज थिंग. फ्रॉक. फ्रॉक न्यू फ्रॉक और पिंक फ्रॉक और आप ब्यूटीफुल फ्रॉक भी कह सकते हैं. Here are some more examples like I have a nice daddy. यहाँ पे देखिए daddy कैसा है? Nice. तो nice is an adjective. Next is Snoopy is a naughty dog. Snoopy कैसा dog है? Naughty. तो naughty dog की quality बता रहा है कि वो चीज वो कैसी है. तो यहाँ पे this is also adjective. Next is my shoes are old. अब मेरा shoes कैसा है? Old. तो old is an adjective here. Nice is an adjective and teddy is noun. Next is naughty. Naughty is an adjective and dog is a noun. Old is an adjective and shoes are naming word or noun. There are some more examples. Rahul has 8 apples. अभी नंबर जो होते हैं जो कि बताए कि कौन सी चीज कितनी है, these are also called adjectives. जैसे Rahul has 8 apples. राहुल के पास कितने एप्पल्स हैं? 8. 8 is adjective here. A square has 4 corners. स्क्वायर में कितने कॉर्नर्स होते हैं? 4. तो 4 is an adjective. I have 2 pencils. मेरे पास कितनी पेंसिल है? 2. तो 2 is also an adjective. Here 8, 4 और 2 ये सारे नंबर को बता रहे हैं. तो नंबर भी एडजेक्टिव होते हैं. एप्पल, कॉर्नर और पेंसिल. These are called naming word or noun. So students, I hope you all have understood the adjective. If yes, let us be confirmed about it by solving the exercise. So questions are: underline the correct adjective in these sentences. Here are the sentences. Rita is wearing a pink frock. Number 2, the sky is blue. Number 3, the dog found a large stick. Number 4, there is little water in the well. Number 5, we make delicious cookies. Number 6, a spider has 8 legs. अब आप यहाँ पे देखिए आपको इसमें आइडेंटिफाई करना है कि हर सेंटेंस में एडजेक्टिव वर्ड कौन से हैं. तो चलिए हम इसके आंसर्स देखते हैं. फर्स्ट इज Rita is wearing a pink frock. अब इसमें एडजेक्टिव वर्ड कौन सा है?
पिंक, क्योंकि ये फ्रॉक की क्वालिटी बता रहा है कि फ्रॉक कैसा है। नेक्स्ट इज द स्काई इज ब्लू, तो स्काई कैसी है? यस करेक्ट, इट इज ब्लू इन कलर। द डॉग फाउंड अ लार्ज स्टिक, डॉग को क्या मिला था? स्टिक, तो वो स्टिक कैसी थी? लार्ज। This is the adjective or stick is a noun. Next is there is little water in the well. तो water कितना है? ज़्यादा या कम? That is little. So little is an adjective. We make delicious cookies. Cookies कैसी है? Delicious. A spider has 8 legs. Spider के कितने legs होते हैं? Correct. 8. So 8 is a number and number is called adjective. So students, I hope you all have understood the topic adjective. So now you all complete your work. Now this is the time to learn and write your work. So we will meet again in the next video. Till then, thank you.